Hi everyone, in this video I'm going to share the recipe of chicken pakora. I hope you guys will like it. सबसे पहले एक बाउल में हम बेसन ले लेंगे. Add salt. Add parsley. Add green chilies. Add spring onion. Add chili flakes. Add garam masala. वाटर ऐड करके हम इसका थिक मिक्सचर बना लेंगे. इसमें हम बोनलेस चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे. मिक्स इट वेल. मीडियम फ्लेम पे अब हम इनको फ्राई कर लेंगे. इट्स रेडी. अब हम इनको सर्व कर देंगे. I hope you guys will like it. Give me your feedback in comment box. For more videos, please subscribe my channel. Thanks for watching the video. Bye. Hi everyone. In this video, I'm going to share a very different and yummy recipe of samosa. I hope you guys will like it. सबसे पहले हम बॉइल्ड पोटैटो को मैश कर लेंगे. Add black pepper. Add salt. अजवाइन लेंगे हम. इसको हैंड्स में थोड़ा क्रश करके ऐड करेंगे. ऐड पार्सले. इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे. मैं फ्रोजन पराठा यूज कर रही हूँ. इसमें हम फिलिंग जो पोटैटोज की हमने बनाई है वो ऐड कर लेंगे. और जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है आपने. ऐड मोज़रेला चीज. ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं. Add some green chilies.
अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी सारी साइड्स हम प्रॉपरली कुक करेंगे। जितना हम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे उतना ये क्रंची होगा। इट्स रेडी। ट्रायंगल शेप में मैं इसको कट कर रही हूँ। I hope you guys will like it. Give me your feedback in comment box. For more videos, please subscribe my channel. Thanks for watching the video. Bye. Hi everyone, in this video I'm going to share the recipe of KFC style tender pops. I hope you guys will like it. सबसे पहले हम boneless chicken लेंगे cubes shape में. Add salt. Add chili sauce. Add black pepper. Add garlic powder. Add paprika powder. Add milk. Add white vinegar. Mix it well. मिक्सिंग के बाद इसको ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे मैरिनेशन के लिए। एक बाउल में हम व्हाइट फ्लोर लेंगे 1 कप, हाफ कप लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, एड सॉल्ट, एड चिली फ्लेक्स, इसको मिक्स कर लेंगे हम। एक बाउल में हम एक एग ब्रेक कर लेंगे, एग को बीट करेंगे। जो एग हमने बीट किया है उसे चिकन में ऐड कर लेंगे। आफ्टर मैरिनेशन जब हमने फ्राई करना है तब अपने एग ऐड करना है। चिकन को हम फ्लोर के मिक्सर में ऐड करेंगे। अच्छी से जब फ्लोर की कोटिंग अच्छे से चिकन पे हो जाएगी तो चिकन निकाल के हम कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे। कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद वापस हम इसको फ्लोर में ऐड करेंगे। फिर इस पे फिर से फ्लोर की कोटिंग हम करेंगे।
इनको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करना है। फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। साइड्स जो है वो हम 1-2 दफ़ा चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा साइड्स नहीं चेंज करनी। इट्स रेडी, इनको हम निकाल लेंगे। I hope you guys will like it. Give me your feedback in comment box. For more videos, please subscribe my channel. Thanks for watching the video. Bye.